Hello everyone. A very warm welcome to all my participants. My name is Parul Sharma and uTrade Algos और शेयर इंडिया की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के एल्गोरिथम वेबिनार में. A big thank you to all the participants जिन्होंने अपने कीमती समय में से अपना ये समय निकाला और हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन किया. आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग की जाए विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट. सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर मिस्टर विशाल मेहता का, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का एक जाना पहचाना नाम है. हेलो सर. Thank you, Pavel. All good. How are you? Good sir, good. Thank you. How are you? All good, all good. ग्रेट. सो मिस्टर विशाल के पास 22 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. विशाल सर ने अपना CMT सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन कंप्लीट किया है मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन से और MS फाइनेंस की डिग्री ICFAI स्कूल ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज से कंप्लीट की है. इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सिर्फ इंडियन मार्केट तक सीमित नहीं है. ये ब्लूमबर्ग, थॉमसन रॉयटर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े फाइनेंशियल प्रोडक्ट कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, विशाल सर ने 4 सेंट्रल बैंक्स के एम्प्लॉयज को ट्रेन किया है जिनमें RBI, नेपाल राष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका और सेंट्रल बैंक ऑफ मालदीव्स भी शामिल है. इन्होंने 10,000 से ज्यादा ट्रेडर्स को ट्रेन किया है और उन्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के बारे में गाइड किया है. सर, बिफोर वी प्रोसीड, इफ आई मे आस्क अ क्वेश्चन, as per your experience, जो आज के मार्केट कंडीशंस हैं उसमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? आज की मार्केट कंडीशन में आई थिंक सो डिसिप्लिन इज द की because over a period of time what I've realized is nothing but a systematic transfer of money happens when a new guy comes in from an undisciplined trading तरीके से वो start करता है and whatever they hear, whatever they think is working and they don't stick to it for a long time. So because the regime अभी change हो रही है तो एक आपको time देना पड़ेगा हर चीज को एक profitable बनने के लिए. So I think so discipline is something that I would definitely kind of put as the first priority, and the risk management, क्योंकि survive हो गए तो पैसा बन जाएगा. ओके जैसे हमारे रेगुलेटर ने एक नोटिस पुट आउट किया था कि 9 out of 10 traders lose money. And there is a very famous saying with broking community, 90% of the trader lose 90% of their capital in the first 90 days. Okay, that's a normal number. तो कहीं ना कहीं हम लोग खाली सस्टेन्ड कर गए या फिर हम लोग ब्रेक इवन भी रह गए थोड़े स्टार्टिंग के महीनों में या स्टार्टिंग के करियर में. आई थिंक सो इट विल reap a lot of benefits at the end of our career. Right. So basically technology फाइनेंशियल मार्केट्स पे बहुत इम्पैक्ट डालती है, राइट? एंड दैट इज फॉर द बिगनर्स एज वेल, बिकॉज लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी इज फॉर एक्सपीरियंस पीपल ओनली, बट इट इज फॉर द बिगनर्स एज वेल, राइट? आई थिंक सो पारुल, आपने जो पॉइंट टच किया वो बहुत ही वैलिड है कि डिसिप्लिन मतलब मैं खुद एक एल्गो ट्रेडर हूँ लेकिन मैं खुद थोड़ा बहुत डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, जस्ट टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी. एंड ज्यादातर मुझे उसमें लॉस होता है. लेकिन मेरे जो एल्गोज है विच आर थ्रू यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी एंड विच इज कंसिस्टेंटली बी फॉलोइंग द रूल्स विथ डिसिप्लिन एंड स्टेइंग इन द गेम फॉर अ while has given me the profits. So that's the difference that I can definitely tell you. Technology do help in being disciplined and being in the game for a long period of time. So basically participants, as you can see, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे विशाल सर अपने इनवैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर करेंगे जो ना सिर्फ आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को अपग्रेड करेंगे बल्कि आपको एक डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक ट्रेडर बनने में भी हेल्प करेंगे. सो uTrade Algos एक नो कोड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो हर रिटेल ट्रेडिंग के को एम्पावर कर रहा है टू इम्प्रूव देयर गेम. एंड विशाल सर is also a part of algo trading these days, and I hope कि उनके insights हमें उन सब चीजों को ओवरकम करने में हेल्प करेंगे जिससे आज की डेट में या तो रिटेल ट्रेडर डरता है या उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो सब उसके लिए भी है. सो इस सेशन के दौरान आप अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं. विशाल सर उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे थ्रू आउट द सेशन और वी विल टेक दीज क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन. सो ओवर टू यू सर.
Thank you, Thank you so much. Parul, for a kind introduction. So let me just share my screen with you, and if you can just help me to confirm you can see my screen. Let me just share my screen first. Now, if you can confirm, Yes, 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 it's in a PowerPoint presentation mode. it's good. Perfect. Okay, awesome. Thanks a lot, Parul. So आज का सेशन जैसे पारुल ने बताया बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, चक्रव्यूह का तोड़, ठीक है, एंड ओपन इंटरेस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी. आई विल टॉक अबाउट ओपन इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग इन डिटेल, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि बेसिक्स हैज टू बी क्लियर, एंड बेसिक्स से ही आपकी मोस्ट एडवांस स्ट्रेटेजीज डेवलप होती है. So we're going to talk about it, and I really like the way the naming, and I reached out to Parul and Bhavya and Dhruvin and every one of us. I really want to meet up a person who is keeping this name. ये जो नाम रख रहे strategies का कौन रख रहा है? Because it's very interesting names, and you will understand why. Okay. So let's start with this. Just from a disclaimer perspective, I'm not a SEBI registered investment advisor, and this is only for educational purposes. And we are not making any claims about anything. We are just providing you education and how the system works in the back end. और as we repeat कि आपको अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस करना है, आपको खुद मेहनत करके पहले ये समझना है कि क्या हो रहा है, and then only invest your hard earned money. So I would highly encourage you कि भाई हर एक चीज को आप तोल के कीजिएगा, and I'm sure this strategy I've been using for my personal use as well, and it has really helped me. So I'm hopeful that it will also help you in your financial trading journey. A quick background, जैसे पारुल ने बताया था, I've been in the market for a long period of time, 2002 से 2024. लंबे अभी तो 25 हो गया, 24 के ना अभी खत्म हो गया, बट गुड 23 साल की जर्नी रही है. आई वर्क विद ऑल द फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कंपनीज, बीट स्पाइडर सॉफ्टवेयर, रिलायबल सॉफ्टवेयर, ब्लूमबर्ग, थॉमसन रॉयटर्स, and I'm also founder of a company called MarketScanner, which works on imparting the knowledge of the financial market, be it derivatives, technicals, and fundamental analysis. So yeah, let's directly jump to the point, and maybe let's keep this session little interesting and maybe interactive. So there is this word that we all use, is open interest. Can anybody tell me what is an open interest? I know हम लोग सब सीखने आए, लेकिन I'm sure we have good 60-70 people in the group, and at least few of them or many of them would know what is an open interest. So maybe if I can get it something on the chat, if you can type it out, it will be good, because I'm a kind of a presenter or a teacher or a trainer, whatever you want to call me, is I need to be interacting with you guys. Otherwise, it will be very difficult for me to kind of go ahead. Okay. So buyer seller की जो करता है outstanding contracts, I'm getting good answers. Number of contracts open at the time. Thanks Subramaniam, thanks Ashish, thanks Shashank. So I think so you guys got it right कि जो buying selling करता है तो open interest के फॉर्म में होता है. तो जिनको पता है उनके लिए रिवीजन है, जो नए लोग हैं उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है. So we'll go with a very basic and then build it up from there onwards. So what is an open interest? Classic book definition is a number that tells you how many contracts are currently outstanding in the market. ठीक है? Which is a simple mathematical or a definition, I would call it. But let's understand from a practical trader perspective. समझ लो एक बायर है और एक सेलर है. बायर को तेजी लग रही है और सेलर को मंदी लग रही है. तो बायर मार्केट में आता है, बोलता है भाई मेरे को बाई करना है, तो सामने सेलर को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो उसको सेल करना है. So they initiate a one contract, and that initiation of that contract we call as an open interest. Open interest by the parties. Okay. Since both of them have traded together, the open interest is one. Okay. So buyer has bought the contract and seller has sold the contract. That's why open interest is one contract. Now, assuming if the buyer and seller both exit at one contract position, what do you think will be the OI? मैंने बाई किया और फिर मैंने सेल कर दिया, and if we were the only two counterparties in the market, what would have been our OI? Perfect, zero. I don't have to be a rocket scientist to know that, but yes, it is the right answer. The OI will decrease by one contract. But let's make it little complicated now. कि भाई मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी और को बेच दिया, then what do you think will be my open interest? If I shift my trade to someone else, Shubhit mentions it right, it is still one contract.
क्योंकि मार्केट में कुछ नई चीजें नहीं हुई है, जो एक बंदा था, एक बायर है और एक सेलर है. And that's where I want to take a small pause and talk to you about the open interest and volume. Okay, that's where people get confused कि open interest और volume में difference क्या है. Open interest is only one side of the story. अगर एक buyer और एक seller है, तो जितने भी नंबर ऑफ बायर खड़े उतने नंबर ऑफ सेलर खड़े, मे बी नॉट इन नंबर ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स बट द कॉन्ट्रैक्ट्स वाइज. That tells you that you have to take an OI from an one perspective, either buyer or seller, and we'll talk about it how we want to take it in the future. But as of now, for our easy understanding purpose, हम लोग एक साइड का कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कैप्चर करते हैं. जब भी हम लोग ये एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एक्चुअली हम लोग वॉल्यूम की डेफिनेशन में बात करेंगे, तो इट इज टू वॉल्यूम. क्योंकि इसने बाय किया और इसने सेल किया, दैट मीन्स देयर इज वॉल्यूम इज 2 बट द OI इज 1. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि OI और वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंट है. सो नेवर कंफ्यूज OI विथ वॉल्यूम. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So OI, when it moves to the third party, it remains unchanged. So we have taken a small example just to make sure that every one of us are on the same page. Day 1 है, ट्रेडर ए आया, ट्रेडर बी और ट्रेडर सी है. ट्रेडर ए ने 5 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए, ट्रेडर बी ने 3 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए. व्हाट डू यू थिंक ट्रेडर सी ने किया होगा? 8 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए होंगे. ही वुड हैव बॉट 8 कॉन्ट्रैक्ट्स. यस, लेट्स सी. Shobit is saying yes. Actually no. Trader, I am sure a lot of people would have got confused कि भाई ऐसा क्यों होगा, 5 3 8 हो गए तो सामने इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए. एंड दैट्स व्हाट द ट्रेडर सी डिड. whatever the 5 plus 3, whatever the open interest was created, it was sold by trader C. Now, so what we say is, एक साइड का बायर ले लो या सेलर ले लो, my open interest is 8, it is not 16. Okay. Always remember that. On day 2, जो ट्रेडर ए था उसको प्रॉफिट हो गया, उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया. 5 कॉन्ट्रैक्ट में से 4 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, तो ही स्टिल होल्डिंग ऑन टू 1 कॉन्ट्रैक्ट. ये जो 4 कॉन्ट्रैक्ट इसने बेचा ट्रेडर ए ने, बी वाज वेरी बुलिश, सो ही बॉट दोस 4 कॉन्ट्रैक्ट्स. व्हाट डू यू थिंक ट्रेडर सी ने किया है? चलो लेट्स टेक अ स्मॉल गेस. व्हाट डू यू थिंक ट्रेडर सी वुड हैव डन इट? ही वुड बी स्टिल बी सिटिंग एट लेवल 8, बिकॉज ये जो बेचा है उसके सामने 4 खरीद लिया. So my OI still remains at 8. So far so good. Can I get a thumbs up in the chat? Perfect. So OI on the day 1 was 8. After all this buying and selling and everything, OI in the market is still remaining at 8. Now a common question that comes to your mind is कि OI देखे कहाँ पे? So if you come to your trading terminal, you can see there is a option chain. ओके, आप जब भी uTrade पे या शेयर इंडिया के टर्मिनल पे जब भी लॉग इन करोगे, तो यू कैन सी दिस स्ट्राइक, कॉल LTP, कॉल डेल्टा, कॉल IV, एंड देन देर इज दिस फीचर which talks about, like, you can see the OI has been kind of prices are moving, and OI depending will after every 3 minutes will move. Okay guys, so this is nothing but OI or change in OI. So that gives you a good understanding in terms of what is the open interest in the market. Now, चलो जैसे ही हम लोग OI की बात कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज को आपको ध्यान में रखना है. ओके, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस व्हेन न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्रिएटेड. सिंपल है, जब भी आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो एक OI 1 है, लेकिन और 4 नए प्लेयर आए मार्केट में और उन्होंने बाइंग की, so my OI is going to increase. So in a way, if you want to put it in a simple term, open interest is nothing but long contract equal to short contracts. As I told you in the first slide, जितने नंबर ऑफ बायर्स है उतने ही नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए, तभी वो ओपन इंटरेस्ट होता है. ओपन इंटरेस्ट ऑन एक्सपायरी डे at 3:30 has to be the same. Open interest at 9:15 of the new expiry is always 0.
ओके, ऑब्वियसली अगर किसी ने रोल ओवर किया हुआ है तो आगे से उनके कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होना चालू कर देते हैं, लेकिन इन अ वेरी थियोरेटिकल और बुकिश एग्जांपल that theoretically at 3:30 the open interest should ideally, whatever the buyers and the sellers will get nullified, should be zero, and open of a new series also starts with a new buyers and sellers. ये बात आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि भाई वाई तो पहले से ही बिल्ड होनी चालू हो जाती है. ओके, so now let's talk about, and this is where we start getting into a bit of strategies now, how to read OI. Okay, so let's take this with an example. And obviously the lot size has changed since I did the presentation about a month back. So it was on December expiry, and I know we have changes of the lots happening, but just for an understanding purpose, this still holds true. अगर मैं एक ऑप्शन खरीदता हूँ निफ्टी का 24,750 का, तो मुझे कितना मार्जिन लगेगा? कैन एनीबडी टेल मी ऑन एन रफ अराउंड आइडिया? नोप. Okay. Yeah, so I'm going to give you a hint. It's an option buyer. Yes. Depending on the option premium. I'll say, okay, at that point of time, whatever the premium was, the premium payable to me was 7,000 rupees. So nice, Nilay. Brilliant. Okay. 7,000 was my premium that I paid as an option buyer. Similarly, if I was selling the same option, okay, as a seller of an option, I know the margin has increased, but what time पे margin कितना था? I will take you the margin calculator. The margin was almost 52 plus 12,000. Obviously, because I've sold that option, I will receive that premium. So my net margin was 64,000. सेम कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऑप्शन बायर है और एक ऑप्शन सेलर है. ऑप्शन बायर 7,000 रुपए की कमिटमेंट लेके आ रहा है मार्केट में, और एक सेलर है वो 64,000 की कमिटमेंट लेके आ रहा है, या ऑलमोस्ट विद न्यू मार्जिन 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर भी हो गया है, एक कमिटमेंट लेके आ रहा है. व्हाट डू यू थिंक इस किसकी कमिटमेंट ज्यादा है, ऑप्शन बायर की या ऑप्शन सेलर की? लेट्स गो बैक टू द बेसिक गाइस. आई स्टिल रिमेंबर दैट कि मेरे जो टीचर थे डॉक्टर सिकेन नारायण, उन्होंने मुझे बहुत सही चीज सिखाई थी कि विशाल, ज्यादातर लोगों को एडवांस में इंटरेस्ट होता है, लेकिन एडवांस पढ़ाने के लिए अच्छा होता है, पैसा बनाने के लिए नहीं. पैसा बेसिक चीज से बनता है, और अगर आप बेसिक ग्राउंड वर्क पे जाके सीखोगे चीज को, तो आई थिंक सो दैट विल रियली हेल्प अस, एंड इट हैज हेल्प्ड मी आल्सो इन दिस डिफिकल्ट मार्केट. व्हाट डू यू थिंक, किसकी ज्यादा कमिटमेंट होगी, बायर की या सेलर की? ऑब्वियसली द आंसर एवरीबॉडी इज पुटिंग अस इज सेलर, बिकॉज एक बंदा 1 लाख रुपया डाल रहा है और एक बंदा 10,000 डाल रहा है. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि बायर की कमिटमेंट नहीं होती. बायर की कमिटमेंट की जो ड्यूरेशन होती है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, वो स्पाइक के लिए खेलता है या स्कैल्पिंग के लिए खेलता है. जितने भी बायर्स को मैं जानता हूं, मेरे जो अच्छे दोस्त है, विजय है, शिवा है, या आप भी बहुत सारे ट्रेडर्स को जानते रहोगे, उनका बाइंग का होराइजन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के लिए. जब भी सेलर की कमिटमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, मिनिमम 15 मिनट से स्टार्ट होती है, 1 घंटा, 2 घंटा और पूरा पूरा दिन या पूरी पूरी एक्सपायरी तक. सो वी नो सेलर की कमिटमेंट ज्यादा है, तो सेलर ज्यादातर अपने आप को देख रहा है कि मैं कहां पे अपने आप को सेफ फील कर सकता हूं. सो एवरीथिंग दैट यू विल लुक फ्रॉम इन दी ओआई इज फ्रॉम अ सेलर्स पर्सपेक्टिव एंड नॉट फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव. क्योंकि जैसे हमने बताया कि अगर आप बाय कर रहे हो तो कोई सेल कर रहा है, और आप सेल कर रहे हो तो कोई बाय कर रहा है, तो मुझे किसी का एक का तो व्यू लेना है, क्योंकि दोनों की तो लेवल तो सेम ही है. किसी ने बाय किया और किसी ने सेल किया, तो मैं कमिटमेंट किसकी देखूं? एंड दैट्स व्हाई आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको एक सेलर की जो ये रहती है, कमिटमेंट होती है, उसको देखना है कि भाई ओआई को सेलर पर्सपेक्टिव से समझना है. एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव. ठीक है. जो ओआई है उसको हम लोग एक मार्केट सेंटीमेंट इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, या फिर लिक्विडिटी के लिए, या फिर ट्रेडर कन्विक्शन के लिए, या पोटेंशियल प्राइस डायरेक्शन के लिए. अगर मैं आपको बोलूं ना, ये स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट करके रख लो, इसमें बहुत पावरफुल है, क्योंकि यही चीज आपको लाइफ में, या एटलीस्ट ट्रेडिंग वर्ल्ड में, लाइफ तो नहीं बोलूंगा, ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी इफ यू आर ट्रेडिंग विथ ओपन इंटरेस्ट. नाउ इफ आई वांटेड टू से टुडेस
like, as an example of market sentiment indicator, what do you think will be a indicator that I'll be talking about? Anybody wants to take a guess? Anybody wants to take a guess? कि अगर how an open interest in trading really helps me. So City is saying PCR. Anybody else? Super trend, okay. Any more? Think around it, because वो बोलते हैं ना, there is a famous saying, if you make people think that you are thinking, they will love you, but if you make them really think, they will hate you. So Max Pain, PCR, I think so. You guys, support and resistance, you guys are hitting the nail. Okay. When I talked about market sentiment indicator, I am talking about put call ratio. Okay. And if you guys have seen today's, as for an example, okay, आज और इन ड्यूरिंग द डे जब भी मार्केट नीचे गया, फिर जोर से रिकवरी हुई और फिर वापस एंड ऑफ द डे नीचे आया, द पीसीआर वाज ऑलवेज बिलो 1. okay, that what it was saying is there were more call sellers even during the market when it was rising. There were more and more people who were selling calls than the people who were buying selling puts. तो अगर मुझे पीसीआर को देखना है तो इट वाज बिलो 0.65 तक से चालू हुआ था, 0.72 तक गया और बाद में एकदम नीचे आ गया. सो द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आज के दिन में कौन भारी है मार्केट में. अगर आपके ज्यादा कॉल बिक रहे हैं, ओके, देन योर सेलर्स आर मोर एग्रेसिव. अगर आपके पुट ज्यादा बिक रहे हैं तो bullish people या sellers of the put market who expecting the market to go up is very high. तो आज का सिनारियो में ओपन इंटरेस्ट की बेसिस पे अगर आपने पीसीआर रीड किया होता था तो आपको सुबह से पता चल रहा था मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है. एंड दैट्स हाउ ओपन इंटरेस्ट रियली हेल्प्स यू. एंड एज आई टोल्ड यू, एंड इनफैक्ट नॉट मी, यू ओनली टोल्ड मी कि the seller's conviction is much more than the buyer's conviction. And throughout the day, seller's conviction of the calls were much higher than the seller's conviction of the put. And that was reflective in the prices. So that's the one way that you can use OI in the option trading. Okay. Which site gives you a free PCR data? Just go to NSE website. You have total, in the option chain, you'll be able to see the total open interest in call and total open interest in put. So that gives you the market sentiment indicator. Liquidity measurement. आज की तारीख में मैंने अभी स्टॉक ऑप्शंस में भी थोड़ा ड्वेल करना चालू हुआ है. ओके. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज लिक्विडिटी मेजरमेंट. इस स्ट्रेटेजी को चक्रव्यूह का तोड़ क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई चक्रव्यूह में घुस तो सकते हैं, बाहर भी निकलना है. सिमिलरली लिक्विडिटी इज समथिंग वेयर विच विल हेल्प यू. क्योंकि अगर मैं यही चीज को स्टॉक ऑप्शन में करता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए समझना कि कहाँ पे अगर मुझे घुस तो गया हूं मैं ट्रेड लेने के टाइम, लेकिन मैं एग्जिट के टाइम मुझे निकलने के लिए लिक्विडिटी मिलेगी कि नहीं. एंड द वंस विच आर द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, मतलब आपने अगर बाय किया है तो किसी ने बेचा है और मार्केट अगर आपकी फेवर में चला गया तो जो सेलर है ना उसको बाय करने आना पड़ेगा. तो इसीलिए आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी. लेकिन अगर कोई इलिक्विड काउंटर में आप चले गए तो शायद आपको बाय तो कर लिया, वो टाइम पे सेलर भी मिल गया, लेकिन जब भी आपको एग्जिट करना है शायद आपको वो सेलर ना मिले और वो कहीं अपने आप को, जो आपका जो ओरिजिनल सेलर था वो कहीं जाके फ्यूचर में हेज कर रहा है या कहीं हेज कर रहा है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जहां पे सबसे ज्यादा ओआई है वो आपकी लिक्विडिटी मेजर करती है. ट्रेडर कन्विक्शन, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ये 3 पैरामीटर है. इज कि भाई ट्रेडर्स क्या सोच रहे कि ये लेवल के बाद मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगा. व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, अगर आज निफ्टी, कैन एनीबडी टेल मी वेयर द निफ्टी क्लोज टुडे? अनफॉर्चुनेटली आई वाज डूइंग समथिंग सो आई कुड नॉट figure it out. If somebody can tell me what was the nifty close, let's put it this way, let's learn. Anybody? Okay,
ओके 23,430 परफेक्ट, थैंक यू गाइस। सो 23,430 का आपका निफ्टी का क्लोज हुआ है, एंड अज्यूमिंग 23,400 पे सबसे ज्यादा पुट मतलब ओआई बिल्ड हुआ है, और 23,600 पे सबसे ज्यादा कॉल का ओआई बिल्ड हुआ है, दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट पीपल आर बुलिश राइट नाउ कि भाई मार्केट 23,400 नहीं तोड़ेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा पुट का ओआई बिल्ड हुआ है। मतलब क्या है, द सेलर्स ऑफ पुट आर नॉट वरीड कि मार्केट इसके नीचे तो नहीं जाएगा, और ऑन द अपसाइड 23,600 इज वेयर द कॉल गाइज आर थिंकिंग कि भाई मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। एंड दैट अगेन रीबैक्स टू आवर क्वेश्चन फर्स्ट कि सेलर ऑफ द ऑप्शंस की कमिटमेंट देखनी है मुझे, नॉट फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव। तो जहां पे भी सबसे ज्यादा कॉल और पुट का ओआई है, वो आपको बता रहा है कि ट्रेडर की कन्विक्शन क्या है। ओके, and the potential price difference, and somebody written how you can use OI in option trading, and I remember in the chat somebody has put it, it is acting as a support and resistance, and it's a brilliant answer, क्योंकि जहां पे भी सबसे ज्यादा OI राइट हुई है ना, that shows traders conviction is there, there is a liquidity and people are ready to put their money कि मार्केट इसके नीचे तो नहीं जाएगा और यहां से रिवर्सल मारेगा, and that's why it becomes a potential price direction के ओवाई नीचे की तरफ आया और पुट से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, और ऊपर में कॉल की तरफ टच हुआ और वहां से नीचे आने की कोशिश करी। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट which may be very helpful for you is called as OI trapping. Okay, we will come to that at a second stage, but just to give you an example, जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, we expect the market to be in that range, but assuming if the prices reaches and it starts going above that prices, तो जो भी 23,600 पे जो कॉल सेलर थे, या इन आर केस लेट्स टेक मार्केट नीचे जा रहा है और 23,400 के पुट सेलर थे, दे आर नाउ वरीड, क्योंकि 23,400 की जगह पे अभी प्राइसेस हो गया है 24,350। ओके, एंड द मार्केट इज स्टिल गोइंग डाउन एवरी पासिंग मिनट, तो वो अपनी पोजीशन को काटने के लिए दौड़ेंगे, एंड दे विल स्टार्ट कवरिंग देयर पोजीशंस, एंड दैट्स वेयर दिस OI trapping happens, but that also gives you a potential price direction for few minutes to few hours. So far, you guys with me? So we are going to focus on this two majorly: trader conviction and potential price difference. That is what this Chakruvuyh ka Tod uses in his analysis, and to make sure that we make money using this strategy. So, एक तो OI आपको क्या देता है, पहले तो मेरे को कौन सी स्ट्राइक लेनी है, सबसे मोटा क्वेश्चन ही वही होता है। कोई भी ऑप्शन ट्रेडर आता है ना, कौन सी स्ट्राइक लू या कौन सी स्ट्राइक बेचू, इन द मनी बेचू, एट द मनी बेचू, और आउट ऑफ द मनी बेचू। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्ट्राइक प्राइस मैपिंग, और this strategy actually helps you which strike to sell. Okay, this answers the most difficult question for any option seller trading through an OI. आपको ऑटोमेटिकली स्ट्राइक डिफाइन करके दे दी, ये स्ट्राइक बेचनी है आपको। ट्रेंड रिवर्सल डिटेक्शन, जैसे हम लोग बताया कि मार्केट अगर यहां से 23,600 जा रहा है, ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी अगर 23,600 का कॉल था वो कहीं पे नहीं हिला, उसका ओआई सबसे हाईएस्ट रहा, व्हाट इट टेल्स यू कि भाई जो कॉल बेच रहे हैं उनको जरा भी डर नहीं लग रहा है कि 23,600 के ऊपर तो मार्केट जाने ही नहीं वाला, तो और बेचो, यूज एवरी अपॉर्चुनिटी दैट इज राइजिंग टू सेल मोर, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ कि भाई ये ट्रेंड रिवर्सल डायरेक्शन देगा, और सिमिलरली ऑन द बॉटम हाफ अगर पुट के पास आ जाता है तो वहां से अपने को अपसाइड पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट मिलती है। एंड ऑब्वियसली इट ऑल्सो हेल्प्स यू फॉर द स्क्रीनिंग कि मार्केट की रेंज क्या बनेगी। तो ये सब तो विशाल आपने आके बोल दिया, तो हम लोग ने क्वेश्चन पूछा भाई, बट डू वी हैव एनी ओआई बेस्ड स्ट्रेटेजी, ये तो ठीक है ज्ञान की बात हो गई, क्या मैं ट्रेड कर पाऊंगा इससे? द आंसर इज obviously we have Parul, we have Kunal, everybody with an answer, or Bhavya with an answer. The answer is yes.
We have an OI based algo strategies which is completely systematic. जैसे पारुल ने बताया, you have to follow in a thoroughly disciplined manner. Okay, and the beauty about it is the broader logic is been given out to you, so that is why you'll be more confident to trade the strategy, because it's not a black box strategy, it's a completely white box strategy for you to understand. But then why does uTrade actually opens out a strategy? See, having a strategy is one thing and executing that strategy is a second thing. And that's why it is very important to have an system or an automation which helps you to trade that system. So if you go through uTrade Algos, there are many new strategies. Chakruvuyh ka Tod, Guruvar, Turtle Trader, Teji Mandi ka King. These are all unique names. But I talked about in the future journey, we are going to talk about each and every strategy. And if you are interested, you can put it on the chat, and we may actually run a webinar on all those strategies for you to learn. Okay. So Chakruvuyh ka Tod is one of the strategies. Obviously, we are not going to give you the performance because of the SEBI mandate and SEBI guidelines, but it actually tells you in the last month, which is actually the live traded account, it had a 64% win with a 36% loss. So which is a decent what I would call it as a win rate ratio for any strategy, and specifically in the regime that we are talking about recently. क्योंकि ये regime इतनी difficult हो चुकी है आज की तारीख में कि we have been trading it for a long period of time. We all are going through a rough patch, but this strategy stood the test of the time. And वही मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, जो स्ट्रेटेजी एक अंडरलाइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल पे या बेसिक प्रिंसिपल पे बनती है, they tend to survive long enough. Obviously, they will go through drawdowns, they will have a tough phases, but eventually they will make money, and that's what we want. We want to make money consistently. And as you can see, Chakruvuyh ka Tod, Nifty had a good win. Obviously, Sensex has recently been introduced, so it has an 100% win rate. But again, do your own diligence. Don't go by just the numbers. Okay? So now, what is the strategy? Yes, let's go into the rules of the strategy. Strategy में करना कुछ नहीं है. 10 बजे देखो. The strategy starts at 10 o'clock. Anybody wants to take a guess? Why 10 o'clock? Why 10 o'clock? Why not 9:15? Why not 9:16? Perfect. See, over a period of time, OI market participants take some time to understand the market data, because 9:15 को 9:16 को 9:20 को 9:30 तक आपके जो भी ओवरनाइट के न्यूज है वो अकाउंट हो जाते हैं. ठीक है, तो बाय 9:30 the OI start building up. But why we are taking it is basically जब भी कोई बड़ा gap up gap down भी होता है, so by 9:45 to 10 the OI actually gets built up very nicely, and that gives you the conviction of the trader. And secondly, we are trying to use something, a range bound strategy. So range bound strategy, because there is a famous saying in the market, not a famous saying, it's a data that shows actually कि 9:15 से 10 के बीच में फर्स्ट 45 मिनट्स में आपके डे हाई और डे लो बन जाते हैं. ठीक है, तो जो भी वॉलेटिलिटी होनी चाहिए वो पहली 45 मिनट्स में खत्म हो जाती है. बाद में मार्केट में एक रेंज बन जाती है और मार्केट रिमेन्स इन दैट रेंज, एंड दिस स्ट्रेटेजी एक्चुअली हेल्प्स यू टू डिफाइन दैट रेंज. सो जैसे कि आप देख सकते हो 10 बजे ये स्ट्रेटेजी चालू होती है. 10 बजे हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई मार्केट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओआई कहां पे बिल्ड था. वी कैन सी दिस इज ऑन बैंक निफ्टी, यू कैन डू इट फॉर सेंसेक्स एंड निफ्टी एज वेल, कि भाई हाईएस्ट ओआई मेरा 44,500 की कॉल में था 10 बजे, और मेरा पुट में था 44,300. एज यू कैन सी द हाईएस्ट ओआई वाज इन दिस टू स्ट्राइक. सो एज अ ट्रेडर मुझे क्या करना है? व्हाट डू यू थिंक मैं क्या करूंगा एज अ ट्रेडर? मुझे कुछ नहीं करना है. ओके, मेरा हाईएस्ट ओआई 44,300 के पुट में था और 44,500 के कॉल में था. शायद मैं उल्टा भूल गया था, बट या यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट. 44,500 का कॉल एंड 44,300 का पुट. मुझे कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स. मुझे 2 स्ट्राइक मिल गई है,
मुझे आके खाली उनको बेच देना है 10 बजे. And this is the chart of that particular day. As you can see, morning में एक बड़ा सा gap down हुआ, market reversal हो रहा है, and that's why we were preferring 10 o'clock. If you see the next day also, the market fell down and then recovered by 10 o'clock, the market remained in the range. And as you can see, the market remained in the range throughout the day. So अगर मैंने इसका call और इसका put अगर बेच दिया होता है, when the market is remaining stabilized after the very volatile day in the beginning, I'm just going to sell call and the put. Now that's what this strategy does. आप थोड़ा शॉक में रहोगे, बस यही करता है. तो ये तो बड़ा सिंपल है. And that's why I again repeat and I will repeat it many times. The basic strategy works, the advanced strategy is good for training. इसमें अभी caveat क्या है? You have to understand that part now. Okay? अगर मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा तो आपको स्मूथ डिके मिल जाएगा and the strategy will turn into a profitable strategy. इसमें caveat क्या है? Let me just give you a caveat which I have not put as a part of the PPT but part of our conversation. कि assuming ये जो OI build होती है ना और ये जो OI change होती है, it comes from the exchange with a delay of 3 minutes. So every 3 minutes or based on the OI change, we are recalculating every time where's the maximum OI. And assuming that goes up, यहाँ से निकल के यहाँ पे shift हो गया, so we will book a loss in one of the call strikes. से 44,500 से market ऊपर जा रहा है, जैसे ही 44,500 हो गया तो यहाँ पे highest OI नहीं था, highest OI moved to 44,600. We book the loss in 44,500 or maybe profit because it happened at about 3 o'clock, and we move our strike to 44,600. Okay, so we are always with the smart people in the market. कि जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एंड वी आर ऑलवेज विद देम. और ये इटरेशन हम लोग 2 बार 3 बार करेंगे और उसके बाद वी विल स्टॉप द स्ट्रेटेजी, विच इज अ रूल डिफाइंड इन द uTrade Algos. Okay, and that's what this strategy does, guys. But trust me, we have been running this strategy and it has successfully given us a consistent profit. I will use my words very carefully, not super duper profit but a consistent result. And that's why it is very important to build those kind of strategies which keeps on adding a small alpha over a period of time in your arsenal. So with this, I think so you should definitely go and check out uTrade Algos. There are many other strategies you can actually sign up and then you can take it up from there onwards. So with this, yeah, my session is done. Yes. So there are a couple of questions. Sure. So first question is from Namit. He's asking PCR changes from 0.7 to 1 to Sure. 1.1. How to read this? That's a brilliant question. There are 2 ways of looking at this data: standalone basis and the change in the PCR. And we are running our own data analysis on this because I'll give you a classic example between yesterday and today. Okay. Yesterday was a classic example where the calls were more written and put were also written, but there was more call writing happening than the put writing. And we were building our short position. Interestingly, the PCR 0.65, okay, started going to 0.72, 0.82, almost to 1, not 1, but 0.82. And the market actually reversed. Because market में पहले दिखाई दे रहा था, market was bearish, and then during the day, it reversed back. So then you would read that when the PCR starts to go from a 0.5 to 0.8 to 1 के आसपास जा रहा है, तो market is turning very bullish. And that's one philosophy and which is correct. Interestingly, today भी वही हुआ. Market नीचे गया. Okay, सुबह market was in the downtrend. But PCR started going up throughout the day. And then there was a reversal for a sudden period of time. But the call was still more written than the put. And the market again came back. So obviously it is over a period of time you will realize which one worked for you. Either the only PCR value, if it is below 1 or above 1, or you want to actually check the rate of change of the PCR.
If you ask me honestly, I would go with the first one. Just look at the PCR value rather than the rate of the change of the PCR. But again, we are also running our numbers, which has more predictability power. Right now, we are sticking to the ones which is just PCR values. Great. So there's a follow-up question on the same, how to calculate PCR. Okay, so PCR is nothing but you take the total number of call open interest. If you go to the option chain of NSE or uTrade Algos, there is an option chain which actually gives you the what is the total number of open interest in the call and what is the open interest in the put. So put divided by call will give you the PCR. So if the PCR value is greater than 1, that means either there are more puts written, that means people, जैसे ही हम लोग ने बोला था कि seller of the put is telling you the market is bullish, and if the PCR value is less than 1, मतलब calls are more written, then market tends to go down. So this is how the PCR is calculated. So there is a question, is it good to watch OI or change in OI? This question is asked by two people actually. Perfect. Again, I will go back to the same first point, the OI and the change in OI. If you are a discretionary trader, I would put say change in OI because it behaves with the market condition. लेकिन कई बार हम लोग ने देखा हुआ है कि हम लोग चेंज इन ओआई जो देख रहे हैं वो क्या होता है कि मार्केट बढ़ रहा है और ओआई चेंज हो रही है. ऑल ऑफ अ सडन मार्केट, अगर समझ लो सुबह सुबह आपने बहुत सारे कॉल बेचे थे और मार्केट नीचे जा रहा था, यू आर वेरी हैप्पी, ऑल ऑफ अ सडन द मार्केट स्टार्ट्स गोइंग अप, सो पीपल विल स्टार्ट अनवाइंडिंग देयर कॉल पोजीशन, तो आपका ओआई ऊपर की तरफ जाएगा. बट इंटरेस्टिंगली वंस दैट इज डन, द मार्केट अगेन गोज बैक डाउन. So then again the change in OI because people will start selling more calls. So it is a very tricky one. I would prefer static because जितना मैं simple रखता हूँ ना, मेरे लिए life में वही profitable दे रहा है rather than just too much of complication adding. There's a follow-up question on the same. Yeah. Maximum how many adjustments are done based on change in OI? So I think so it is total amount. First it is but I can double confirm with you. Maybe I'll put it on the YouTube channel. But I think so it's first your trade and there are two times of adjustment. After that we stop. Sobit Chauhan is asking, can we observe market sentiments by combining some change in Vega and change in OI? Well, that's again a brilliant question, Shobit. Right now we are still stuck with OI. Obviously we are changing in Vega is we are tracking it differently. We really want to keep different buckets because when I was a technical analyst and I used to kind of learn, I'm still a technical analyst, but what I was saying is like when we used to trade, people would come and tell me कि विशाल आज सब इंडिकेटर बुलिश हो गए तो मार्केट ऊपर जाएगा, and I would ask which all indicators, and they would tell me RSI, ROC, MACD, and I would like ask them, okay, but all of them are taking closing into consideration, and if there is a big green candle, your RSI, ROC, MACD, everything will turn bullish. You are taking only information from the one dimension and trying to predict the direction. So what we try to do is try to have a different strategies running. Volatility, run it independently. OI, run it independently and try to see if they match well and good. But if they are giving a different signal, we are taking differently. And that is actually helping us. So we try to, kind of bifurcate them and keep it differently. One question, which is, I guess we should be addressing at the most priority. Can we take positional trade on Monday morning, considering the monthly OI for position trades for a week? Yeah, see, the traders, as we spoke about, Parul, and beginning of our session, we spoke about the commitment of traders, right? And if you are looking that commitment of traders is not moving and they are still showing call as more and then less than puts, it is showing the commitment. And it's not me who is just deciding the market. It's collectively the option traders who are deciding the market. Guys, option sellers can be also be wrong. And when they are wrong. And that's where the spike happens. But that's what we say. That, we always make fun of retail people. And we say the trend is your friend, right? Or, until it bends. The retail people or even the smart people,
are wrong at the bottom and the top. In between, they are always right. Always remember that. Okay. And we, as in retail people or the smart people or whatever the option seller, I would call it, okay, are generally very right about the direction of the market unless and until we are proven otherwise. And that's where the OI trapping happens. And to answer your question, if the data shows that call is written more than the put, then the answer is with you. I don't have to answer, give it to you. You know what to do. And you have seen in the market behavior also. So there's one more question. How are you tackling slippages when exiting or shifting strikes? Yeah. अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो slippages is part of the trading, but not me, but I would say Share India plus uTrade, and it's a deadly combination. And I have seen it personally for myself. Everything depends on the state of the technology that we are running with. And when you get a signal, how fast you get a signal, how fast you process the data, and how fast you cover your position and fire the order of exit and entering the new order. Everything depends on that. And I think so, Share India being the largest broking house in India, and with uTrade technology, who is master when it comes to the co-location behavior and co-location ideas, I think so they've built a lot of good stuff. And we, including me, I will be very taking that ownership that I've been running my own strategies or the uTrade originals, and I see very minimal slippages when it comes to execution. So I think so it's all about technology than anything else. Also, I would like to mention here, sir, that we have a fan in the attendees list today, your fan. So his name is Sobhit, and he's saying that I'm in love of your strategy on 5-minute breakdown rolling straddle by adding ROC or super trend and RSI below 40. I'm trying building algo on that by learning Python. Perfect. Yeah, I think so. That's what we are talking about. Like, if you follow this kind of simple ideas, you would avoid spikes. You will be at least, not very wrong. You will be wrong, trust me, but your probability of being wrong will be very less. Sir has answered your question. And anything that you would like to know about him, and there are a couple of people who are asking for tutorials from them. So you can drop down your questions, your queries on our social media channels, and Sir would be available for answering all your questions. Yeah. So moving on to the other question, what is consistent average profit per month in this strategy? Shivi bars us from saying all these numbers. So I would try to avoid it, but you can actually log in into uTrade Algo and definitely check out yourself. And there is an option for backtesting that strategy. And the interesting part about the backtest of uTrade, it is actually not the backtest. It is actually the trades that been done in the live terminal, which are uploaded as in backtest. That means it is accounted for slippages also. It's a real trade. It's not just a paper trade. So whatever you will see as in PNL, it will be reflective of actually what is the PNL that you would have achieved, barring all the transaction costs. So I guess if we can take our last question. Sure. Can you repeat which strike had today's maximum OI according to Nifty close? I'm right now not handy with that information, but I think so people in the group are now very smart enough to just go to option chain and figure out where the maximum number of OI has been built up right now. Great, right, sir. So I thank you so much, sir. Thank you for such a great session, and it had been a very interactive session. To be very honest, everyone was on their toes to ask you the questions and to answer your questions as well. So before we leave for the day, so I just wanted to have one tip from you. Just one thing that you can tell to our attendees, to us, so that when we come back on Monday, we can implement all the strategies and some of the things which we have learned today. So the best place is go to uTrade, open up an account, start with one strategy, just deploy some amount, just keep on checking it every day.
एंड धीरे 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 यू विल सी कि जब भी आप बाइसिकल सीखते थे तो बाजू में दो पहिए थे, and the uTrade originals are those two wheels next to your cycle that is helping you to start your journey as an algo trader. The minute you are already in the algo now the thing is you have to keep on pedaling yourself. Over a period of time you will realize I don't require those two wheels. I may not require the uTrade originals. I'll be trading my own strategies, but at least it's a good start beginning for everyone who wants to start their journey. Great, sir. Great. Thank you so much, sir. Thank you Yes. for your time. And I guess if everyone who are attending this webinar, अगर वो बोल सकते तो वो यही बोलते. Thank you for your time. Thank you for such great insights. Thank you, sir. Thank you, and Share India and uTrade and Parul, Bhavya, Dhruvin, everyone who has given me this great opportunity to share my knowledge with all of you. The Thank you. pleasure is all ours, sir. Thank you Thank so you. much. Bye bye. Thank you. Bye-bye.